I'm sure will drive the education even further. At the very heart of it, believe that passionate people can really change the world. थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सारा मोटिवेशन। पटना जाए चाहे दिल्ली जाए या कोटा जाए, वहाँ पढ़ाने वाले मैक्सिमम आपको बिहारी ही मिलेंगे। 50% ऑफ NRIs जो बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, वो कभी वहाँ रहने नहीं गए थे, सिर्फ पढ़ने गए थे। We have built an AI प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चा ऐप से डिस्कस कर सकता है, वॉइस चैट बेस्ड है। Success, whether on the chessboard or in life, comes not from haste but from careful thought, patience and strategy. सर मैम प्लीज। Yes, champions. सर चिकन सर वो भी चला था ना दूसरा वाला। बस ठीक, थैंक Vyasa IT Educational Group of Institutes and GD Goenka Public School Motigari. I extend a heartfelt welcome to you all for inaugurating the education of Bihar and the prize distribution ceremony for the Motigari Open Chess Championship 2025. A very special welcome to our esteemed chief guest, Dr. Pradeep Kumar sir, Deputy Development Commissioner Champaran. Sir, your presence adds immense value and encouragement to our students and our mission. I also warmly acknowledge the pillars of RBI Group. Thank you for strengthening institutions that build futures. And to our students, teachers, parents, and the entire organizing team, thank you for being here. Today's event has two beautiful meanings. The first is celebration. Chess is not just a game. It teaches patience, focus, sportsmanship, and decision making under pressure. Every student who participated has already won something bigger than a trophy: discipline. The second purpose is meaning. When we say inaugurating education in Bihar, we are not talking about a slogan. We are talking about an ecosystem. An ecosystem where schools, coaching institutes, parents, teachers, and students move together with one shared mindset: growth. Bihar has talent in abundance. What it needs, what every great learning culture needs, is a strong support, structure, guidance, exposure, confidence, and consistent mentoring. That is exactly why Vyasa IT and GD Goenka have come together. This collaboration is about combining strengths, strong schooling with strong academic mentoring. So our children don't just study to pass, but study to understand, apply, and lead. Let today be a reminder that when Motigari decides to build something meaningful, it doesn't take long for excellence to appear. Once again, welcome everyone. Let's begin this wonderful program with energy, pride, and the belief that best chapters of Bihar's education are still ahead. To set a graceful and spiritual tone, we have a beautiful Ganesh Vandana presentation. I invite Stuti of class 10 to present the Ganesh Vandana. A big round of applause for Stuti. Mike. Good afternoon, everyone. Good
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीक्षाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानाप्रणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थाय ने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे गुरुदैत्रिकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदा रक्षाय गुरुपुत्र परितात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतकोत्राय धीमहि गुण्डगुल्फाय गन्धमत्ताय भोजप्रद्याय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Thank you. That was wonderful. Now we move on to an address that truly sets the context of today's event. I feel proud to invite on stage my dear friend, Mr. Sunit Kumar Tiwari. Especially for our friend sitting here, he is an inspiration. Mr. Sunit is from your very own city, Motihari. He was the first among the East Champaran in IIT JEE entrance exam for 2012. He had every reason and capability to choose a comfortable, high-paying path for his life. He worked for Samsung Research Institute, where many dream to reach. Then he served our country as an assistant commandant in Indian Armed Forces, a profession of immense dignity and respect. Yet he chose to step away from both because he was searching for something bigger than a job title. And he found that purpose, a purpose that involves you, the people of Motihari and the people of Bihar. Please put your hands together as I invite Mr. Sunit Kumar Tiwari on the stage. Honorable Chief Guest, respected guests, faculties of school, staffs, and Nanne Munne Bachcho. I'll start with what we want to do here. What is this we have mentioned? Reinvigorating education of Bihar. And the first thing that anyone would think कि online देख के fancy से नाम लगा दिया है ChatGPT से नहीं. What is this ecosystem that we talk about? And I should clearly state that when I talk about ecosystem, it is the ecosystem created by these new institutes like GD Goenka and Abhyas IIT. Moving forward, we first need to understand the reality on the ground of Motihari. What is going on? This city's education system has been rotten. When I first came to this city to set up our institute, I didn't know the reality of what was going on. Sir, all the old schools की मैं अगर बात करूँ, तो just to give you some example, mostly schools में ऐसे environment है जहाँ पे parents और guardians डरते हैं that बच्चे यहाँ पे बहुत negatively influenced हैं and गलत चीज़ों में involved हैं, teacher का कोई control नहीं है. पढ़ाई तो is last of their concern. Most of the day goes into suppressing pressing events or incidences that occur. एक बच्चे के साथ कुछ इंसिडेंट होता है तो उन बच्चियों से उसका प्रूफ मांगते हैं, ना कि कल्प्रिट को कन्फ्रंट. एंड देन सडनली आई कनेक्टेड द डॉट्स, लाइक आई वाज एबल टू रियलाइज द व्हाट आर द लार्जर पिक्चर दैट इज गोइंग ऑन, बिकॉज व्हाई दिस स्टेट सीज सो मेनी बैड एग्जांपल्स एट द लार्जर लेवल. क्यों यहाँ ड्रॉप आउट रेट्स इतने ज़्यादा हैं? आफ्टर क्लास 10th, like 95% students move out. 5% of them who stays, they stay because of the external factors, not because they want to. एक famous logical statement सुना था said by Amir Khan, that he said कि if you are a bad engineer ना, then you will affect maybe 100-200 people.
a bridge may fall, a building may collapse or so. If you are a bad doctor, maybe you will affect a couple of thousands of people. But if you are a bad teacher, then you will affect generations after generations. So when I was wondering that how to influence this high level rotten system, how to affect this change, then I got to see an ecosystem in the same town. I'm talking about this school, where I saw innocence among the students, where students were mentally free from the pressures of the negativities of the world, where negative elements actually feared that they might get into trouble if they do anything openly. And my niece studies here, so I actually feel relaxed that she's out of home and at school and not worried about it that she's out. So I'll explain this with an example of an incident a while back. I was sitting in principal office with Vinod sir, and there was a complaint lying over a portal for the past 2 days. He got so furious about it, that why was it lying for past 2 days and I didn't know about it. And it was an excusable reason that there was a holiday at that time and he was outside. But I realized, I learned a very valuable lesson that day, that if you are quite adamant at the top na, that if you are very adamant that कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी है, then bottom line will follow. That day taught me a very good lesson. And it's really tough. Like we also get calls from students' parent a lot कि आप कौन होते हैं बच्चों पे एक्शन लेने वाले. And we have around like 10% students drop out because of the toughness of the curriculum in the very first around 2 months, and 5% we kick them out because of the negativities that they bring to the school, the institute. And then some parents are like कि जैसे कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं सर विच आर नॉट स्पोकन वेरी आउटराइटली. लाइक अगर किसी फीमेल स्टूडेंट को किसी लड़के ने कंफर्टेबल किया, उसके अगेंस्ट अगर एक्शन ले लो, देन पेरेंट्स आर लाइक कि आप उस फीमेल स्टूडेंट को भी बुलाओ, हम उससे पूछेंगे, शी मस्ट प्रूव दैट. आई एम लाइक कि आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम तो किसी बच्ची को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे. दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी डज, राइट. नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ क्रिपलिंग प्रॉब्लम इन बिहार, जहाँ पे हम अपनी घर की बेटियों को घर के बाहर होने से डरते हैं, रखने से डरते हैं, हम सेफ फील नहीं करते. इवन इन देयर स्कूल, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स. बट गोइंग थ्रू दिस स्टैंडिंग फॉर्म इज नॉट दैट easy. Sir was able to build such an ecosystem at a place in Bihar where I thought it was unimaginable. And for this I'm thankful. I'm thankful to him, to Amit Bhaiya, and to all the management of GD Goenka and Abhyas IIT family. Thank you really. Having been a student from Motihari myself, I can understand how much important and helpful this system is for the students of Motihari. And this society is very much below the standards it should be. है ना. मैं भी यहाँ पे जब आया था सर, इट्स लाइक आई थॉट ऑफ इट एज अ मिशन. पीपल यूज्ड टू से कि दलदल में अपना हाथ डाल रहे हो, है ना, कि कुछ नहीं कर पाओगे, नथिंग विल चेंज एंड ऑल. एंड बट आई सेड टू माई सेल्फ, इफ नॉट मी देन हु. आई हैड सच ग्रेट कंपेनियंस विथ माई सेल्फ हु हैड शेयर्ड माई विजन टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. एंड टफ है शायद इसलिए हमें करना है. हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, राइट. द बेस्ट माइंड एंड बेस्ट पीपल आई बिलीव शुड बी इन एजुकेशन. Those who can take initiative, I believe, if won't take the initiative, the world will never become a better place. और मैं तो ऐसे इकोसिस्टम को सब बचपन से देख रहा हूँ. माई फादर वॉज इन कलेक्ट्रेट, ही वॉज पेस्का टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, बड़ा बाबू बोलते हैं उन्हें. तो ही वॉज रियली ग्रेट एट हिज जॉब during, and he is known for his helpfulness in this society. आज भी सर around 15 years later I get to hear examples. कोई भी अगर unknown जो मिलता है वो उनका नाम इतना रिवेयर करता है, एक स्टोरी से सुना जाता है हमें, मैं हूँ भैया आए हैं, फिर कोई एक स्टोरी सुना जाता है कि हाँ उन्होंने ऐसे हेल्प करी थी, उन्होंने ऐसे. he has settled like hundreds of families from village to Motihari, helped them with job opportunities. Continue. So I was talking about my father's helpfulness. Like कई गाँव के ऐसे families में ऐसे भी लोग हैं जिनको जैसे उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं था, तो उनको शिफ्ट करके अपने घर में रखा, उनको पढ़ाया. उनको बाहर सेटल होना था तो उनको बाहर सेटल करने में हेल्प किया. आई स्टेट वन इंसिडेंट फ्रॉम बचपन में. एक गांव से कोई एक आदमी आए थे, उनका जैसे फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसे, और वो ऐसे घर के बाहर एक बार खड़े थे, मिलना था उन्हें पापा से भीष्म जी. तो उनका एक इशू ये था कि उनका पेंशन पास नहीं हो रहा था सालों से, उनके पास पैसे नहीं बचे. अब वो परेशान. तो ऑफिस में किसी ने बोला कि आप एक बार भीष्म जी से जाके मिलिए, वो शायद हेल्प कर दें. तो वो एक बार घर के बाद पापा से जब वो मिले, पापा ने उनकी इश्यूज सुने, वो उनको बाइक पर लेकर गए, ऑफिस में सारा क्लियर कराया उनका सब कुछ. एंड देन उनकी जेब में कुछ पैसे रखे, बोला कि अब आपका सारा काम हो गया, अब आप चले जाइए. एंड हैविंग, मतलब ऐसे कई सारी स्टोरीज सुनने के बाद, मतलब इवन आई थिंक, एंड ही वॉज पावरफुल. आई बिलीव पावरफुलनेस कैसे आती है, इफ यू होल्ड अ ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर ग्रेट एट योर जॉब,
then you are powerful. तो ही वॉज पावरफुल. एक ऐसा इंसान जिस पे इतनी डिपेंडेंसी है, इतनी जिम्मेदारियों के बीच वो ये कर पाता है कि सोसाइटी के लोग उनके हेल्पफुलनेस से इंस्पायर्ड हैं. द देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री नर्मदेश्वर लाल, उनका एक स्टेटमेंट था, आज भी याद है मुझे, दैट बोल्ड टेक्स्ट, कलेक्ट्रेट के ब्रेन थे भीष्म बाबू. दैट वाज द स्टेटमेंट एट दैट टाइम. एंड यू मे से इट्स नॉट रिक्वायर्ड, it doesn't affect this world, it's still the same, but I believe differently. People like him, their contributions, madness, passion and willingness to act have impacted many lives and have created human values. The biggest value a person can get is human value, and that value is their legacy, and that legacy stays with us. And I believe that even if legends pass away, their legacy remains. We need great people working here, great passionate people. One thing I realized after all my fields of experience, be it the campus of IIT or the corporate buildings of Samsung or the mountain peaks of training ground in Mussoorie. I've been to 3 different places, but one common thing, that was great people. If you can get great people inside an ecosystem, they then drive themselves. You don't need to monitor them. You don't need to tell them what to do. They then drive themselves. That ecosystem and the ecosystem that we are trying to build here requires us to organize events like this, the chess championship, and further events I think Chetan sir will announce later, I guess. And most importantly, I would like to point it out that for these events, private institutions and institutes must come forward, because they contain the capable crowd which can fuel the bigger cohesive ecosystem. Some of the things, some might say that we have come really far, but I don't share that vision. I think we have come like a centimeters ahead on a road that is like a kilometer long, and we have to go a long way, right? And last में अब कुछ बड़ी बातें कर देता हूँ. अमित भैया यहाँ पे like मतलब क्या पता, as he has already given this city the best CBSE school, perhaps next he can give this city the much needed best ICSE school as well. And we will make sure to bring the best talents from IITs and NITs to this city to guide and motivate our students and children. And through Pradeep sir, I would request that this administration understands and appreciates this fine ecosystem. क्या पता ऐसे fine echoes perhaps many years down the line gives some bigger institutes like IIT to this city, which is known for contributions of Mahatma Gandhi. है ना, कभी जाकिर खान कहते हैं कि कभी कभी बड़ी बातें कह देनी चाहिए, क्या पता ऊपर वाला सुन रहा हो और कह दे तथास्तु. एंड इफ यू लुक एट द एजुकेशन ऑफ स्मॉल सिटीज, इट डजंट लुक गुड. All the great people, businessmen, IITians, NITians, they are off to building bigger businesses, going abroad for a job worth of thousands of crores, but hardly any of them are into education. And those who are, they are in the big centers where they are not the drivers of change, but they are instead money printing machine. We, as the current steerer of the ecosystem here, sir, that you see, and that I'm sure will drive the education even further, at the very heart of it, believe that passionate people can really change the world. We have had the opportunity to work around passionate people, and I believe people who are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. Thank you. Thank you, Sunil sir, for reminding us that success is measured by the impact we create. Now, with your kind permission, sir, we would like to present a short movie around 2 to 3 minutes, and it spans the entire chess event that has been done until now. This short movie captures the progress, spirit, and highlights of the event. May I request the technical team to please play the video? जैसे कैसा नहीं होता, senior to the team of parents and family. I believe that people who usually do good in chess are good in study level. We were able to do it because we have had so many modalities like this. Chess as a game and chess as a community has been so segregated so far.
to make it reach to everyone, every family. And so हर कोई जब इस चीज के लिए then I would feel that this event is become successful. Just gives a very good exposure to students in terms of what actual problem solving is. I start playing games. Hello, this is Davis Patel. इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कम्युनिटी है चेस सोनियर्स जो है वो यहाँ पर आ गए बटने हैं अभी I want this event to be seen as representative of Mutiari. कि ये पूरे स्कूल इकोसिस्टम में जितने स्टूडेंट्स उन सबके चेस को रियलिटी से रिप्रेजेंट करें. Thank you, sir, for watching it with us. We hope it reflects our passion and effort behind this event. Now comes one of the proudest moments, honoring excellence. May I invite our chief guest, Dr. Pradeep Kumar, sir, to kindly distribute the medals and chess souvenirs to the finalists of the Motiari Open Chess Championship. Volunteers, please, can you accompany the top finalists to the stage? Rajin sir, can you please come? First, Devesh Patak. A big round of applause. Congratulations, Devesh. यहाँ पर आ जाओ जी, आप आके सेकंड अंशुमन तिवारी. को तो बीच में करने कर देने की बाद में से ट्रॉफी मिलेगी आपको. थर्ड कार्तिक बोरा. नेक्स्ट लक्ष्यराज. प्रतीक देव. शिवम कुमार यादव. And last but not the least, the youngest among them, Shivam Singh.
this. Sir, can you have a group photo, please? अमित जी आप लोग सब भी आइए। नहीं सर, आपके साथ। अरे नहीं हाँ, आ जाओ। नहीं, आ जाएगी फोटो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, जा चलिए लो, ठीक है। नहीं जाना है। फाइनलिस्ट, यू कैन मूव टू योर सीट्स प्लीज। अभी नहीं, बाद में। हाँ, पहुँच जाएगा। Just a special note, the honors which we just gave to our finalists includes the very chess boards on which our finalists played and excelled, and they are signed by our esteemed chief guest and special invitees. Thank you, sirs, for your autograph. Now we move on towards the grand purpose of the day. Chess teaches us something very powerful. Every move matters. Education is the same. Each year, each classroom, each teacher, each decision shapes the future. Bihar has always been a land of learning and transformation. From legacy of Nalanda and the intellectual spirit of Magad to the historic movement in Champaran, where Gandhiji first tested the strength of Satyagraha, truth and non-violence. Our soil has carried ideas that changed India. But now, we cannot live only in history. We must build a future worthy of it. To share a student's perspective on the existing education system and what change looks like from the ground level, I invite Anushka, a student of class 11th, to share her experience. Anushka, come to the stage, please. A very good afternoon to honorable chief guest, respected faculty members, dear friends and guardians. First of all, I would like to welcome our today's dignitary and chief guest, Dr. Pradeep Kumar sir, to the event. It's truly an honor to share my journey in front of such an esteemed personality, who is a proud Deputy Development Commissioner of East Champaran, whose career highlights the values of excellence and national service. Absolutely inspiring. And I'm a bit nervous too, but not to worry, since nervousness is also a sign that the moment is important. Today, I stand before you all as a volunteer for this event, whose theme is reinvigorating the education of Bihar. I'm here not only as a student, but also as a grateful member of this community, which comprises institutions like Abhyas IIT and GD Goenka Public Schools. When I got this wonderful opportunity to share my journey in this ecosystem, a place that has not only shaped my academic skills, but has also empowered me to dream big and chase those dreams with confidence, I felt excited and a bit surreal too. आज मैं अपनी नीट एस्पिरेंट एज अ नीट एस्पिरेंट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को बताना चाहती हूँ, like how it changed my thought process and to some extent my personality too. Few months ago when this journey began, मैंने सोचा कि अब मतलब नीट करना है. I was just another confused teenager facing this huge mountain of need. मेरे पास multiple opinions होते थे, multiple strategies होती थी and honestly multiple fears भी. यहाँ पर हर कोई रैट रेस, एंडलेस ग्राइंड की बात करता था, इस आइडिया की बात करता था कि तुम्हें एक सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा, even to crack the exam. And at that time, I thought that the preparation was all about cramming notes late at night. And Google पे NEET hack search करना was my biggest skill.
मतलब रियली एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता था कि अगर इन टिप्स एंड एडवाइसेस की अगर नोट्स तैयार कर लूँ तो पता नहीं एनसीईआरटी की किताब ही ना तैयार हो जाए. When I first decided to take this NEET journey, my preparation was, well, let's just say it was घर centric. मतलब मेरी strategy सिंपल होती थी, पढ़ो, समझो, याद करो और भूल जाओ. मतलब मेरा एक grand vision था, एक लड़की है, 12-12 घंटे पढ़ रही है, and she is all that sort of disciplined warrior. But the reality was different. And then I entered here. Things got changed. The plot twist. Personally, for me, what truly sets this special environment apart is its aim. It's not just about academic development, it's about overall empowerment, making a teenager grow, improve and realize real dreams. Because ये बात हमारे existing system of education को समझने में थोड़ा time लगेगा. We stand at a cusp of a revolution to transform Bihar not just with brick and mortar development, but with unshakable foundation of world-class education. और ये बात सुनने में बहुत छोटी लग रही हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. ये इंश्योर करना that teaching is not just a profession, but a vocation of pride in Bihar, thereby attracting the best minds to nurture the next generation. और ये जिम्मेदारी इन institutions like GD Goenka and Abhyas IIT में है. ये institutions preparation सिर्फ syllabus पढ़ने का नाम नहीं है, but it's about transforming yourself as a learner and as a person. सीरियसली बस मार्क्स लाने का प्रेशर तो एक स्टूडेंट को हर जगह से मिलता ही है, सोसाइटी, पेरेंट्स, पीयर प्रेशर. पर एक जगह जहाँ अगर ऐसा लगता है कि ड्रीम्स को चेस करना एक आर्ट है और ये आर्ट हमें हमारे मेंटर्स सिखाते हैं. मैं स्पेशली आप लोगों को बताना चाहूँगी अबाउट वन थिंग दैट आई रियली एडमायर हियर इन दिस इकोसिस्टम, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने का सबसे पहला कदम है. इट्स द पर्सनल कनेक्शन. यहाँ एवरी स्टूडेंट मैटर्स सिर्फ एक कैची स्लोगन नहीं है, इट्स द ट्रुथ. यहाँ पर आके लगता है आई एम नॉट वन मोर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम. I felt like I matter, my doubts matter, and my progress matters. Also sir, एक बात जो मैं पर्सनली बताऊँ तो बिहार में everyone, be it everyone, मतलब पढ़ाई से लेकर environment तक हम सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट प्लेसेस चुनते हैं हम हमारे पेरेंट्स. एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे अपने स्टेट का ध्यान तक नहीं आता है हमें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज की कमी है. और इस कमी को पूरा करना ही इस थीम इन इंस्टीट्यूशंस और इस इवेंट का सोल मोटिव है. Honestly, हमें एक ऐसे इकोसिस्टम को बिल्ड करने की जरूरत है that feels less like a factory of students and more like a family of dreamers. ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ एक टॉपर पर फोकस ना करें ताकि वो अपना 100% देके एक रिजल्ट ला सके, हम सब पर फोकस करें ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि हम अपना 100% दे सके. And that is why here development is necessary. This is precious and this is rare. The curriculum must evolve from Radam Vidya to critical thinking and problem solving. स्टूडेंट्स को कैसे सोचना चाहिए ये सिखाने की जरूरत है, ना कि क्या सोचना चाहिए. स्टूडेंट्स को देखने की जरूरत है, not just their score. And that is what these people understand and do. That every student, be it the weakest one struggling to pass or the topper aiming for the top 10 rank, हर किसी को different kind of push, different kind of strategy की जरूरत होती है. हम सब यहाँ पर individuals हैं, crowd नहीं. और अब तो ये 21वीं सदी है, एजुकेशन को स्किल सेंट्रिक होना पड़ेगा, सिर्फ डिग्री सेंट्रिक होने से बात नहीं बन सकती. We need to integrate vocational training, digital literacy and entrepreneurship from the primary level. बिहारी विजडम को तो पूरी दुनिया पहचानती है, बस हम बिहारियों को छोड़कर. क्यों ना वो incredible efforts, वो relentless energy and वो dedication यहाँ भी हो. And this renaissance is brought up here, where every class is a mix of high-level academic hard work and, as sir say, the rigorous training as well, and a sense of belongingness. थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई और बहुत सारा मोटिवेशन. जहाँ पर टीचिंग इज नॉट just about finishing syllabus, but about building understanding, building thought process, and learning time management. सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के लिए. Learning how to handle stress, how to fail, how to get back up, sometimes with a smile and sometimes even without it. हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो पर्सनैलिटीज क्रिएट करें, जो हमें ये सिखाएं कि प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करते हैं, फेलियर्स को मैनेज कैसे करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू ड्रीम रिस्पॉन्सिबली. हमें ऐसे प्लेस की जरूरत है जो सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या लॉयर्स ना बनाए, बल्कि मेक अ मोर कॉन्फिडेंट, अ मोर अवेयर, अ मोर रेजिलिएंट इंडिविजुअल. एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कलेक्टिव मिशन है फॉर फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी. And when I say reinvigorating the education of Bihar, it means restoring the glory of Bihar's education. And as I conclude, I want to express my heartfelt gratitude to our chief guest today. Sir, you are a testament to what hard work and right guidance can achieve. Your presence inspires all of us to dream bigger, aim higher, and believe in ourselves. आपके values सच में हमारे लिए inspiration है. And thank you to this ecosystem, this family who gave me mentors,
who walk with me in every doubt, in every test, in every victory, and in every bad day. Your hard work, your time, and your belief in us makes us believe in ourselves. Thank you so much, sir, for gracing this evening with the lesson. Thank you. Thank you, Anushka. That took courage and clarity. We are proud of you. Now it's time for the cash prize distribution to our top 3 winners. May I invite, sir, please, can you distribute cash prize? Amit sir, please, can you accompany, sir? Kriti ma'am, can you please be on stage? You are welcome to, ma'am. सब कुछ यहाँ करवा देंगे। पहले थर्ड को बता दो। May I invite on stage the winner of third prize, Karthik Bohra. Second prize to Anshuman Tiwari. Congratulations, Anshuman. First prize, Devesh Pathak, the champion of Motihari Open Chess Championship 2025. ठीक है सर। आपकी स्पीच है, आपकी स्पीच है, नेक्स्ट बैठ कर जाओ। ठीक है। 44 स्कूल के बच्चे थे। हाँ सर। 44 more than 44 schools, 350 participants. Yes sir. Award ceremony of Chess Championship 2025 में यहाँ पे उपस्थित जेडी गोयनका के चेयरमैन अमित जी, डायरेक्टर प्रीति मैडम, प्रिंसिपल जागृति मैडम, सुमित जी और अभ्यास IIT की पूरी टीम उपस्थित, यहाँ पे गार्जियंस एंड प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो इस चेस प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए जेडी गोयनका स्कूल और अभ्यास IIT को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन मोतिहारी जैसे शहर में आप लोगों ने किया। तो जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ पे 44 से अधिक 44 से अधिक स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब तक आपका क्या रहा होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या आसपास के स्कूल के बच्चे को ही आप जानते होंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि आप कहीं जब बाहर पढ़ने जाते हैं तब इतने अधिक स्कूल के बच्चे एक साथ आपको मिलते हैं। आप 12th पास करेंगे और किसी दूसरे शहर में कॉलेज में जाएंगे तब इतने अधिक स्कूल के बच्चे मिलेंगे। एक तो इतने अधिक स्कूल के बच्चे आपके साथ एक साथ मिले, निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ पार्टिकुलर चेस में काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग स्पोर्ट्स से क्या सीखते हैं, तो स्पोर्ट्स स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाता है और एक स्टूडेंट के लिए सबसे अधिक पे IIT करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। अभी बता रहे थे सुमित जी कि हम सैमसंग में अच्छे पैकेज पे थे, फिर असिस्टेंट कमांडेंट बने, लेकिन उसके बाद ये अपने टीममेट्स के साथ आप लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोलने का डिसीजन लिया, वो काफ़ी काबिल तारीफ है।
क्योंकि अब अगर बाहर भी जाते हैं, आप पटना जाए चाहे दिल्ली जाए या कोटा जाए, वहाँ पढ़ाने वाले मैक्सिमम आपको बिहारी ही मिलेंगे। अभी भले ही हम लोग कहते हैं कि बिहारी काम नहीं करते हैं, लेकिन अचीवमेंट आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, खासकर पढ़ाई के क्षेत्र में, आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, मेडिकल में देख लीजिए, इंजीनियरिंग में देख लीजिए, साइंटिस्ट लोगों को देख लीजिए, मैक्सिमम लोग बिहार से आते हैं। तो यहाँ पे अगर इन लोगों ने अपना अच्छा करियर छोड़कर यहाँ इंस्टीट्यूट खोलने का डिसीजन लिया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि मोतिहारी के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और इन्होंने कहा कि क्या पता यहाँ IIT हो जाए, तो अब निश्चित रूप से मानिए कि मोतिहारी में IIT आने वाले दिनों में होगा। हम लोग 10 साल पहले कभी ये नहीं सोचते थे कि PMCH गया और दरभंगा के अलावा कहीं मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज देखिए कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो चुका है। तो आने वाले दिनों में IIT भी जरूर बनेगा। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग हमेशा तुलना करते थे दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से कि काश बिहार में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाता। तो बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर पहला हुआ तो मोतिहारी में हुआ। और मोतिहारी ऐतिहासिक धरती है जहाँ से 300-400 साल तक हम लोग गुलाम रहे अंग्रेजों के अधीन। तो उस चंपारण की धरती से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और हम लोग का देश आज़ाद हुआ। तो यहाँ से हम लोग को फिर एक शिक्षा क्रांति शुरू करनी है। हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गए, अभ्यास IIT खुले, और GD गोयनका के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अमित जी को, जिन्होंने GD गोयनका मोतिहारी में ओपन किया। और न केवल यहाँ पे GD गोयनका है, किसी फ्रेंचाइजी से स्कूल ओपन कर लेना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये बहुत दोनों में अंतर है। तो यहाँ का GD गोयनका, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मेरी पोस्टिंग जब यहाँ पे हुई तो मेरे वहाँ पे 1-2 फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि सर GD गोयनका अच्छा स्कूल है, वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाइएगा। मैं यहाँ पे आया, 1-2 लोगों से पूछा, मेरी बेटी यहीं पढ़ती है, तो मैं सीधे हम लोग GD गोयनका आए और यहाँ पे देखे, पूरा कैंपस देखे। अभी प्रिंसिपल साहब भाटिया साहब थे, उनका स्कूल को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये भाटिया साहब हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन आज अगर GD गोयनका इतना आगे बढ़ा है तो अमित जी और इनकी टीम तो पूरी मैनेजमेंट है ही, मैडम बैठी हुई हैं भाटिया मैडम, लेकिन विनोद जी का बहुत बड़ा योगदान है और पूरी मैनेजमेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके द्वारा जो भी सजेशंस दिए गए हैं उन पे हम लोग आगे बढ़ें, GD गोयनका को और आगे बढ़ाएं, ताकि कोई भी यहाँ पे आए तो उसको एक अच्छा एजुकेशन मिले। दूसरे स्कूल से भी जो बच्चे आए हैं उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। बेस्ट विशेष आप सभी लोग को, बहुत अच्छा करें, पढ़ाई में थोड़ा कम भी रहें, थोड़े कम मार्क्स भी आए तो चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा बने। आप लोग को गलत रास्ते पे नहीं जाना है। अगर गलत रास्ते पे नहीं गए तो करियर आप कोई सा भी चुनिए। पहले वाली बात नहीं है कि 3-4 ही करियर है, आज करियर बहुत सारे क्षेत्र में खुल गए हैं। तो अगर आप गलत ट्रैक पे नहीं गए तो जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अच्छा करेंगे। तो आप सब लोगों का एक ही सुझाव कि हमेशा सही रास्ते पर रहें, नैतिक मूल्य और पारिवारिक मूल्य इसको जरूर आप लोग बढ़ावा दें। और 2 बच्चियों, एक अनुष्का, बहुत अच्छा उसने बोला, बहुत ही अच्छी वक्ता, जितने अच्छा हिंदी बोली उतना ही अच्छा अंग्रेजी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो गणेश वंदना जिसने किया, श्रुति, जिस तन्मयता के साथ उसने गणेश वंदना का पाठ किया वाकई सराहनीय है, क्योंकि आजकल हम लोग अपनी संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमने सांस्कृतिक मूल्यों को हम लोग को नहीं भूला है। तो जिस भी स्कूल के हैं, और निश्चित रूप से अभ्यास IIT के वो लोग स्टूडेंट हैं, तो अभ्यास IIT की पूरी टीम को बधाई और फिर से पूरे बच्चों को शुभकामना, और GD गोयनका और अभ्यास IIT को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your leadership and guidance. And thank you, sir, for your consistent focus on development that truly touches
people's lives. It has been source of inspiration for all of us and for students especially. Hearing from you is not just an honor, it is a learning moment that we will remember. Now to move on, I would like to invite a voice that is known not only for his achievements but for energy and an unstoppable drive to create impact. I invite on stage a dear friend of mine, Mr. Prachin Kumar Chahar, founding partner, Abhyas IIT. His journey to Motihari is no less inspiring. After graduating from IIT BHU, he pursued his post-graduation from IISc Bangalore and worked with organizations like Intel and ISRO. But today, he is not just an educator, mentor or coach. He is a radiating ball of energy for our team and for our students. His dream of creating a tangible change in education system is as strong as any dream can be. Prachin sir, we warmly welcome you on stage. The stage is all yours. माहौल थोड़ा सीरियस हो गया नहीं? Good afternoon everyone and congratulations to all the award recipients of this All Motihari Chess Championship, basically conducted jointly by Abhyas IIT and GD Goenka, which is itself a commendable effort towards developing an ecosystem which should have been developed quite a time back for our city Motihari. Today I stand before you to address all the people who are in any sense connected to this education ecosystem. I'll start my speech by stating a shocking but simple fact about different school or I would say reputed schools of this Motihari, that अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे जो थोड़ा बहुत टाइम से चल रहा है, राइट, तो टिल 10th का अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो अराउंड 150-200 बच्चे रहते हैं, एटलीस्ट 4-5 सेक्शन रहते हैं, 40-50 स्टूडेंट्स रहते हैं. बट जैसे ही 11th में मूव ऑन करते हैं, इट ड्रॉप्स डाउन टू 20-30. तो आपका 90% ऑफ जो एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मोतिहारी है वो मोतिहारी को छोड़ के जा रही है. उसे किसी तरह रोकना होगा. अब अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हो, कोई IITs IIMs के लिए, तो समझ में आता है, बट बेसिक अर्ली बेसिक क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर छोड़ना पड़ रहा है, देन इट्स देयर इज अ प्रॉब्लम. मतलब ड्यूरिंग इलेक्शंस मेरा पहली बार एक्सपोजर था बिहार के इलेक्शंस में, राइट, तो एक सिनेरियो सुनने को मिला कि वर्किंग क्लास का पलायन रोको. मैं कह रहा हूं कि पहले बच्चों का पलायन रोको, वर्किंग क्लास का रुक जाएगा. समझ रहे हैं? एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको. 50% ऑफ NRIs जो बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, वो कभी वहां रहने नहीं गए थे, सिर्फ पढ़ने गए थे और वहीं के होके रह गए. तो बच्चों को रोकोगे तो वर्किंग क्लास अपने आप रुकेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेगी. नेक्स्ट आई वांट टू मूव ऑन कि इस जनरेशन को अपन को रोकना तो होगा. क्या अलग और क्या नया दे सकते हो? थैंक यू. Before we conclude, I want to take a moment to appreciate everyone who made today possible. Our chief guest, Dr. Pradeep Kumar sir, Amit bhaiya, the very strongest pillar of RBR group. Preeti ma'am, thank you for arriving. The management, leadership of GD Goenka Public School, teachers, parents, volunteers, and especially our students. Because students are not just the audience of education, they are the purpose of education. Today we celebrated chess, but the deeper celebration is what chess represents: a culture of preparation, practice, courage, and calm thinking. And the same culture is what we want for the academics in Bihar. Bihar's history reminds us that learning is in our DNA. The spirit of Nalanda, the intellectual legacy of Magad, and the transformative movement of Indian history, Champaran Satyagraha. These are not just stories. They are proof that this land has always produced ideas that move society forward. But history is not a resting place. History is a responsibility. So I want to share two future developments, very practical, very immediate, towards our mission of reinvigorating education in Bihar. Sir, this was only the first step for reinvigorating. And now I would like to announce a very special, dear to our heart
development. We will be launching an app, AI-based app soon, by the name Retainly. सर एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हम आए थे, जब हमने इंस्टीट्यूट को खड़ा किया था, तो हमने सोचा था कि हम सबकी मदद कर देंगे, है ना. लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, हम भगवान की तरह ओमनी प्रेजेंट तो है नहीं कि हर जगह हम ही मौजूद हों. तो हमने मतलब जैसे एक आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, बच्चे आते थे सर हमको याद हो गया सुन लो, है ना. तो हम 24 घंटे हम बच्चों के साथ नहीं है. तो देन वी थॉट ऑफ एन आइडिया कि व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग. तो वी हैव बिल्ट एन एआई प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चा ऐप से डिस्कस कर सकता है. वॉइस चैट बेस्ड है कि आप उससे बात करेंगे, है ना. हमने फ्रेंडली सा रोबोट भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है, उड़ा नाम है. तो आप उड़ा से बात कर सकते हैं, जो भी आप सीबीएसई एंड करिकुलम दोनों पे बेस्ड है. एंड बाय जस्ट टॉकिंग टू हिम यू कैन डिस्कस द टॉपिक्स विथ हिम. अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सकते हैं उससे बात करके. और जब आप एक बार तैयार हो जाएं तो उड़ा आपका टेस्ट भी लेगा. वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसको बोल के आंसर देंगे. वो आपके आंसर्स को बेटर करने के लिए इनपुट्स भी देगा. और एट द एंड दैट अलोन ऐप कैन टेक द रोल ऑफ ए यू कैन से जूनियर मेंटर, जो बच्चे की हेल्प कर सकता है अपने जितने भी उसने अभी तक लर्न किया है उसको रिफाइन करने के लिए. सो दैट इज आवर नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड वी विल बी लॉन्चिंग इट नेक्स्ट ईयर, मे बी अराउंड द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स. एंड basically Retainly is designed around one simple truth: learning is not complete when you understand once. Learning is complete when you can retain and recall confidently. And today I am happy to announce something very special, है ना. तो बच्चों के लिए भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनर्स के लिए हम प्राइज लेकर आए हैं. तो Retainly we will be offering it free of services to Motihari, because if we want change, access must come from before advantage. Sir, there is also a second development that we will be beginning soon, and on the same lines जैसे चेस चैंपियनशिप हमने स्टार्ट किया था कि पूरे सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स एक जगह पे आके compete कर पाए, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो और स्कूल्स की कम्राडरी भी डेवलप हो, एक कल्चर हम स्टार्ट करना चाहते थे. तो सिमिलरली ऑन द सेम लाइन्स वी विल बी स्टार्टिंग मैथ्स ओलंपिक्स. Just like chess builds competitive spirit in a healthy way, maths Olympics will do the same inside academics. It will be concluded on the same lines of a championship, structured round जैसे इसमें rounds थे, है ना, preliminary stage, final rounds, same rounds, levels of challenge comparable to maths Olympiad, है ना. मे बी हमने थोड़ा सा उससे टफर एंड पे रखने की सोची है कि थोड़ा ओलंपियाड तक ही क्यों रुकना, थोड़ा और आगे तक चलते हैं. एंड यस, देयर विल बी कैश प्राइजेस सेम लाइक टुडे, एंड इट विल बी फॉर ईच एंड एवरी क्लास फ्रॉम 5th class to 10th class. Why are we doing this? Because we want students to feel that academics is not pressure. It can be sport of mind, a space where effort is respected, excellence is celebrated, and preparation becomes a habit. And to support students properly, Abhyas IIT will provide dedicated study material and preparation resources for Maths Olympics. So this is not the end of today's event. This is the beginning of a larger movement. If we want Bihar to rise, it will not happen only through wishes. It will happen through daily actions. The classroom, the homework, the mentorship, the exposure, the competitions that build confidence, and institutions that collaborate instead of operating in silos. I thank you once again for believing in this shared dream. Thank you, ma'am, for handing help in this achievement of ours. And so this is not the end. I thank you once again. And now, as we move towards the closing moments of the day, we would like to express our gratitude in a small but heartfelt way. It is a privilege for us to honor our esteemed chief guest, Dr. Pradeep Kumar sir. Thank you, sir, for graciously sparing your valuable time and blessing this occasion with your presence. May I request Mr. Amit Kumar, Director RBR Group, and वैसे तो भैया बोलते हैं लेकिन है तो सर ही, and Mr. Navneet Kumar sir, Administrative Director, Abhyas IIT, to kindly come on stage for the facilitation. And also I invite Jagriti ma'am and Preeti ma'am to please facilitate our chief guest.
Thank you, ma'am. Now, for the vote of thanks, I invite the rightful honor of this stage, Ms. Jagrati Bhatia ma'am, Principal, GD Goenka Public School, Motihari, without whom today would not have been possible. And thank you ma'am for your immense support and leadership. I'm very thankful. Before I actually begin with the formal vote of thanks, I would just like to talk something very personal. Of course, I could correlate what Sunit sir was talking about Bihar. The day we got an opportunity to move to Bihar, I was like little doubtful about moving to Bihar because we worked in some of the very good cities, and the last assignment that we had got was in Doha, Qatar. So when I got to know we'll have to move to Motihari, I had never heard of this place before. Yes, of course, when we talk of Bihar, the first name that always comes to our mind is Patna. Of course, then Motihari I had never heard of. So I had a very heated discussion with sir. I don't want to go because I have to think about my own kid also. My daughter is in grade 11 right now. So she's always been studying in very good schools. So I was a little doubtful about it's okay, we have to, we are in this field and it's no doubt our responsibility to work in this field, but then at the same time we have some moral responsibility towards our daughter as well. So I was little doubtful about the opportunity that she would be getting here. So it was really a heated discussion, but then what motivated me was sir's words, you know, those words still resonate in my mind. He said that it's always easy to choose easy things in life. What matters is the challenges that you accept in life. So he said that no, it is going to be a challenge for me. I have given my best in all the good cities where I've worked. Now I really want to work for, you know, a place which can be really, really very challenging for me. Although he lived a very short life, but a large life, rather I would say that. He never wanted to go from this world as an unsung hero. I was in Delhi and I received an award on his behalf. It was really a great honor to get that award, and the GD Goenka Group Delhi had acknowledged his efforts, his contribution, and first of all I would really thank Almighty for giving him some purpose in life. Although I'll always have those, you know, feelings which I really want, I cannot even express those feelings. But then I really want to have a good fight with God, asking him why so soon? Why did you take him so soon? But still, then what gives me little satisfaction was the way he departed from this world. I'm greatly thankful to Amit sir. He was given a grand departure, what he really deserved, because he gave his best to this place. I still remember the day when we came here. What gave us immense satisfaction was the campus, was the vision which Amit sir carries with him. It was only because of the vision that he had and the vision of sir
that we could think of staying here and giving our best. So I'm really grateful to God that He gave him that honor, that even he's no longer with us, but then the countless lives he touched, remember him in good light. And I would always be thankful to Amit sir for acknowledging his contributions, for keeping his contributions alive. I'm thankful to Preeti ma'am and each and every member of this management who stood by me in this difficult phase of my life. Otherwise, things would have been very difficult for me. And if we talk about GD Goenka, of course, GD Goenka is giving a big platform to all the students here. We are not only concerned about academic excellence, but then we believe in holistic development of our students here. We provide them every platform which can help them develop skills that are 21st century skills that can actually make them capable so that they can compete in this world globally. And if I talk about my daughter, she was there in DAV for 2 years, but then of course the environment there is quite different. I would not like to talk much about that environment, but then in GD Goenka, she got a beautiful environment and she's very happy. And Abhyas IIT team, I'm really thankful for collaborating with us because it is your collaboration which is motivating our students. I do remember initially my daughter was like, it's very tough to move ahead, but then with your support and guidance, I think sir had also discussed with you that she's thinking of changing her stream because she won't be able to cope up with this stream, but then you made it easy for every child here. I'm really grateful to you. And now to begin with a formal vote of thanks, I would really begin. Chess does not teach us how to win quickly, but how to think clearly and act wisely. These words perfectly capture the spirit of today's event. They remind us that success, whether on the chessboard or in life, comes not from haste, but from careful thought, patience, and strategy. We are truly honored by the presence of our chief guest, Honorable DDC, Mr. Pradeep Kumar ji. Sir, your presence inspires us all. We are deeply grateful to you for taking time out of your busy schedule to be with us today. Your encouragement and kind words have motivated not only our young chess players, but everyone present here. Chess, much like life, teaches patience, foresight, and thoughtful decision making. Every move on the board requires careful planning, composure, and responsibility, qualities that help shape not only great players, but also confident and responsible individuals. Your support today reinforces the importance of nurturing these skills in the students. Today's award ceremony is a celebration of focus, determination, and sportsmanship. Every finalist has reached this stage through dedication, practice, and calm under pressure, an achievement that deserves recognition regardless of the final result. Each move played today reflects not only skill, but courage, perseverance, and the willingness to think ahead. Lessons that extend far beyond the chessboard. I would also like to take this opportunity to express my sincere gratitude to the esteemed members of the management for their gracious presence and constant support. Your vision and encouragement play a vital role in creating meaningful learning experiences and platforms that help students grow holistically. We extend a heartfelt thank you to Abhyas IIT Educational Institute for their vision and initiative. Their guidance, dedication, and encouragement have been instrumental in providing students with an opportunity to explore their potential, showcase their talent, and experience the joy of healthy competition. A special word of appreciation goes to the parents of the chess players
whose unwavering support, encouragement, and belief in their children make achievements like these possible. Your involvement and motivation inspire young minds to pursue excellence with confidence. I would also like to acknowledge the dedicated staff of GD Goenka, whose efforts behind the scenes ensured the smooth and successful conduct of this event. Your commitment, teamwork, and support truly made this event memorable. To our young chess players, remember that every lesson you learn goes far beyond the board. Think clearly, act wisely, and approach every challenge with confidence. Learn from every move, every decision, and every situation, and carry these lessons into life with pride and courage. Before I conclude, I would like to once again express my greatest gratitude to our chief guest. Your presence has truly elevated this event and inspired every student here. Today's event will be remembered as a milestone, motivating all of us to continue striving for excellence in every endeavor. Thank you once again to everyone who joined us today, students, parents, teachers, mentors, and guests. Let us carry forward the spirit of this event, the lessons it teaches, and the joy of learning and competing with integrity. Wishing you all continued success and a wonderful day ahead. Thank you so much. हम लोग आते हैं